transverse section of the testis. We will continue from this. Transverse section of testis. Supposed to be sorry, testis and करें, मैं testis का लिखते हैं. Transverse section of seminiferous tube. Transverse section of seminiferous tube. And this is supposed to be the transverse section of the seminiferous tubule. मैं यहाँ पे 3 seminiferous tubule का स्ट्रक्चर ले रहा हूँ. एंड हम लोग जानते हैं थोड़ा बहुत एंडोक्राइन चैप्टर में पढ़े थे. There are 3 different type of cells associated with the seminiferous tubules of testis. पढ़ चुके हैं इसलिए मैं तो बहुत ज्यादा यहाँ पे एलाबोरेट नहीं करूंगा. You know, spores are found very close to the Sertoli cells. Why so? Why so? Because it nourishes the spore. What is the other function of Sertoli cells? Sertoli cells are otherwise called as what? North. Also called as what? Sustentacular cell. Sustentacular cells. North cell और sustentacular cell. फंक्शन मैंने बताया है. मैं दो यहाँ पे बहुत सारा फंक्शंस है. So actually we will discuss the function of nut cell separately. This is a sperm or spermatozoa. This is the germ cell, which undergoes the process of spermatogenesis to form the mature sperm. And these are the Leydig cells or interstitial cell. These cells are under the control of which hormone? Hormonal control of spermatogenesis I will separately discuss. Before that, मैं आपको याद करा दूं, हम लोग एंडोक्राइन चैप्टर में पढ़े थे कि germ cells and Sertoli cells are directly under the control of FSH, and interstitial cells are under the control of LH. That is why it is called as ICSH. Secretion of the male androgen, that is testosterone, under the influence of which hormone? LH. Spermatogenesis controlled by FSH. And the Sertoli cells बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक फंक्शन है और ये एनसीईआरटी का है, ऐसा नहीं कि ये फालतू चीज है. पूरा क्लियरली मेंशन्ड है कि Sertoli सेल का भी स्पर्मेटोजेनेसिस में रोल है. और वो क्या है? न स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस दैट इज स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ. ये जो चेंज होता है, क्योंकि स्पर्मेटिड क्या है? राउंडेड है with a large nucleus with cytoplasm. The spherical है, rounded है, without any flagella. But sperm देखिए, elongated है, without cytoplasm, with a flagella, motile. ये जो change होता है, जैसे लार्वा चेंज होके एडल्ट में कन्वर्ट होता है, वैसे स्पर्मेटिड चेंज होके
स्पॉर्म में कन्वर्ट होता है. The spermiogenesis is none other than a type of metamorphosis. A type of what? Metamorphosis. Under the control of a factor secreted by cytosol. ये फैक्टर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है. हम बताएंगे आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल कंट्रोल, तब ये फैक्टर मैं आपको फिर से बता दूंगा. So this is the transverse section of the seminiferous tubules. We'll go for the function of Sertoli cell. Function of Sertoli cells. Number one, as we know all, number one, provide nourishment to sperm. Number two, absorb the seed part during spermatogenesis. You know, spermatogenesis is a multiple step process, right? That is, germ cell will be by means of repeated mitotic division, they will produce the spermatogonia. Spermatogonia will undergo, then that is change into primary spermatocyte, then secondary spermatocyte, then spermatid, then spermatozoa, right? So as it is a different step process, so one state will be, or one form will be changed into another form. Then what happened? A part of the body or part of the structure will set down. शेड होगा तभी तो वो कन्वर्ट होगा दूसरे स्टेज में. तो शेड होने के बाद इस शेड पार्ट को एब्जॉर्ब कौन करता है? सर्टन. Otherwise, the seminiferous tubule of the testis becomes what? Polluted with unwanted material. इसलिए शेड पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है. नंबर 3, secrete androgen binding protein. Androgen binding protein, that is ABP. Androgen binding protein ABP, which concentrate testosterone. So testosterone को concentrate कौन करता है ना? ABP. Androgen binding protein secreted by Sertoli cells. Number 4, act as blood testis barrier. याद करिए ब्लड ब्रेन बैरियर. ब्लड ब्रेन बैरियर का काम कौन करता था? एस्ट्रोसाइट. याद है? टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया. जैसे ब्रेन आपकी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसिटिव पार्ट है, बिकॉज ब्रेन अल्टीमेटली कंट्रोल एवरी एक्टिविटी ऑफ द बॉडी. एवरी एक्टिविटी, वॉलंटरी हो, इनवॉलंटरी, a separate area are present in the brain which control everything. तो इसीलिए ब्रेन ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो हार्मफुल एजेंट जो ब्लड में है वो हो सकता है कि हैम्पर करे. अब सोचिए, टेस्टिस इज कंसर्न्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड स्पर्म डिसाइड द नेक्स्ट जनरेशन. तो अगर स्पर्म डिफेक्टिव हुआ तो नेक्स्ट जनरेशन भी डिफेक्टिव होगा. टेराटोजेनिक स्पर्म मतलब डिफेक्टिव स्पर्म. Defective morphology, defective या structure of this sperm is called as teratogenic sperm. Sperm का मोटिलिटी अगर डिक्रीज हो गया तो sperm राइट टाइम में राइट प्लेस में फर्टिलाइज नहीं करेगा. And that is called as what ना? asthenospermia. ऐसे बहुत सारा वर्ड है, हम देखेंगे. तो अगर ये प्रॉब्लम हुआ, अगर टेस्टिस ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा तो हो सकता है कि डिफेक्टिव स्पर्म प्रोड्यूस हो. That should be well protected, as it is contains the Sertoli cell which act as the blood testis barrier. Number 5, secrete anti-Mullerian factor.
AMF to inhibit the development of Mullerian duct in male. मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा what is Mullerian duct and what is Wolffian duct. I will discuss with you. So just remember, the Mullerian duct in case of male should not be developed. It should be developed only in the female. Because the Mullerian duct is concerned with the formation of the female secondary reproductive organs, like your uterus, like your fallopian tube, like your cervix, like your vagina. ये जो स्ट्रक्चर है फीमेल के केस में कहां से फॉर्म होता है? Mullerian duct से. मेल के केस में ये डीजेनरेट होना चाहिए कि नहीं? कौन डीजेनरेट करेगा? Anti-Mullerian factor secreted by the Sertoli cell. Otherwise, the Mullerian duct may be developed in the male. Because Mullerian duct क्या है कि embryonic duct है. Embryo मेल फीमेल बोथ के केस में सेम है. तो जो भी होता है एम्ब्रायोनिक स्ट्रक्चर वो मेल फीमेल दोनों में कॉमन होता है, बट ये डिसाइड करता है कि व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट इन विच सेक्स. तो इसीलिए मेल के केस में ये डक्ट को इनहिबिट करना जरूरी है, अदरवाइज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विल डेवलप. एंड सर्टोली सेल क्या करता है? ये काम करता है. Number 6, that is, आप लोग पढ़े हो एंडोक्राइन चैप्टर में एक हार्मोन था इनहिबिन, बताया था ना? It secretes inhibin to inhibit the overactivity of FSH. तो overactivity of FSH हार्मोन लोग पढ़े हैं इसके बारे में, इसलिए और ज्यादा जा नहीं है, इसको स्किप कर रहे हैं. मैं आपको अभी बोल रहा था मुलेरियन डक्ट के बारे में. मुलेरियन डक्ट मेल के केस में डिजेनरेट होता है. In case of female, develops into duct, uterus, cervix, vagina. एक सेकेंड डक्ट है जिसका नाम है वल्फियन डक्ट. Wolffian duct also in case of female and male, ये दोनों ही केसेस में डेवलप हो जाता है. मतलब ये Wolffian duct बोथ केस में ये फॉर्म होता है. इट इज ऑल्सो एम्ब्रायोनिक डक्ट. तो ये मेल में भी डेवलप होगा, फीमेल में भी डेवलप होगा. फीमेल के केसेस में क्या होता है? ट्राइगोन, ट्राइगोन तो पढ़े हो ना, एंड अ पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. ये फीमेल के केस में होता है. मेल के केस में डेवलप इनटू ट्राइगोन, part of urinary bladder and vast difference. इसीलिए मेल के केस में वल्फियन डक्ट डेवलप होता है, as it is also developing the trigon and a part of urinary bladder, that is why it is also developed in female. Trigon क्या है? urinary bladder के
जो ओपनिंग है लिखाया गया है पूरा नोट्स में, चेक करिए। ओपनिंग ऑफ टू यूरेटर एंड ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। कंप्लीट। So this is the function of a seminiferous tubule containing the Sertoli cells. So now we are coming to the next structure, that is the male external genitalia, that is penis. Complete. We are coming to the male external genitalia, penis. और copulatory organ. देखिए नॉर्मली हम लोग ट्रांसफर सेक्शन पढ़ के उसको स्किप करेंगे। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि टिप ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ना ग्लैंस, राइट। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे। These are actually erectile tissue. And erectile tissue मैंने आपको बताया है कि erectile tissue are concerned with the erection of any structure, right? And this erectile tissue, it is the only cause by the penis being erected during the copulatory activity between the male and female. And we have also discussed that the normal copulatory activity between the male and female is under the control of parasympathetic. A very big question. During the stress condition, the sexual activity doesn't occur. It is the normal condition, that is parasympathetic, which control everything. And बताए थोड़ा आप याद करिए, एक्सप्रेशन चैप्टर हमने बात किया था कि मेल के केस में कॉमन पाथ होता है फॉर व्हाट, द कंडक्शन ऑफ स्पर्म एज वेल एज फॉर द सीमेन। यूरेथ्रा इज कॉमन, याद है। And that is the reason why when the semen is passing through, the urethra, the urine conduction should be stopped. याद आया? तो यूरिनरी ट्रैक्ट में जो यूरेथ्रल स्पिंक्टर है, वो यूरेथ्रल स्पिंक्टर रिलैक्स होता है तो ओपन होता है, ओपनिंग। याद आया? रिलैक्सेशन ऑफ स्पिंक्टर मसल लीड्स टू ओपनिंग, contraction of sphincter muscle leads to closing. So during the ejaculation of the semen, the urine conduction should be stopped. ये जो sphincter muscle contract करेगा कि relax करेगा, that's the point. लेकिन urination के टाइम में क्या होगा? Relax होगा. Ejaculation के टाइम में क्या होगा? Contract होगा. Under the influence of what? Parasympathetic.
चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये वाला. This is deep artery. These are actually artery and vein. This is septum penis or penile septum. These are the two structure which is called as corpus cavernosum. Corpus cavernosum. And this is corpus spongiosum. And this is actually the urethra. तो यूरेथ्रा किसके थ्रू पास किया है? स्पॉन्जियोसम या कैवर्नोसम? Spongiosum. And the tip of the penis, that is actually the erectile tissue which is formed of only spongiosum. क्योंकि यूरेथ्रा स्पॉन्जियोसम के थ्रू ही पास किया है. समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड टिप ऑफ द पेनिस में जो यूरेथ्रा का ओपनिंग हुआ है, that is to be covered with the tissue called as what ना? Spongiosum. तो spongiosum बन गया आपका कौन सा? That is tip of the penis, that is glans. So this is with erectile tissue. Which cause erection of penis during coitus. Copulation is otherwise called as coitus. And this structure is called as tunica albumina. Tunica albumina is also present around the testes, around the ovary, सब जगह था. This is the transverse section of the penis. बस जो पॉइंट मैंने आपको इंडिकेट किया वही पॉइंट हम लोग को लिखना है. Copulation controlled by parasympathetic. Copulation controlled by parasympathetic nervous system. During copulation, that is ejaculation. The urethral sphincter contracted. The urethral sphincter muscles contracted so that it is closed. So as to
conduct the semen. इससे ज्यादा नहीं चाहिए. अभी अब बात करें तो और एक पॉइंट हम लिख देते हैं, दैट इज ग्लैंड्स. ग्लैंड्स क्या है? The bulging tip of penis and that is formed of corpus conjunctum. हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे accessory gland of male. स्टार्ट करें. So I'm coming to the accessory glands. And under the accessory gland of male, we will discuss three different type of accessory gland. Number one, seminal vesicle. Paired था या unpaired? Tubular, coiled, secrete seminal fluid. यहां पे इंपॉर्टेंट है इसका कंपोजिशन. सेमिनल फ्लूइड का कंपोजिशन क्या है? नंबर वन, साइट्रिक एसिड. डायरेक्टली फंक्शन भी हम मेंशन कर देते हैं. साइट्रिक एसिड एक्ट एज ए बफर, means that will actually control the acid base balance. You know, semen is slightly alkaline because acidic medium will kill the sperm. So as to maintain the alkalinity, it should be act as a buffer. अगर ज्यादा alkaline हो जाएगा तो ये साइट्रिक एसिड उसमें ऐड हो जाएगा, so that acidity, sorry, alkalinity decrease करेगा. ठीक है? So act as buffer. Number two, it contains fructose. And it is the only fructose is present or synthesized only by the male seminal vesicle. इसलिए fructose से questions रहता है कि fructose it is only present in the male semen secreted by the seminal vesicle. It doesn't secreted by any part of the female structure. And हम लोग पढ़े हैं कि जो sexual assault होता है, जो रेप केसेस के केस में जो कंफर्मेशन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इसी के बेस से हम लोग कंफर्म करते हैं. इफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्रक्टोज इज फाउंड इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इट इज अ कंफर्मेशन फॉर सेक्सुअल असॉल्ट बिकॉज नॉन ऑफ योर फीमेल पार्ट इज सिंथेसाइजिंग व्हाट ना फ्रक्टोज. तो इसका फंक्शन क्या है एक्चुअली? ना नरिशमेंट ऑफ स्पर्म. ये स्पर्म को नरिश करता है. नेक्स्ट, इनोसिटोल. Inositol helps in the maturation of sperm. And very, very important, prostaglandin. प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल क्या है हम अभी पढ़ रहे हैं, फिर से हम पढ़ाएंगे फर्टिलाइजेशन जब आएगा, फिर से हम पढ़ेंगे जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ आएगा. मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द प्रोस्टाग्लैंडिन फंक्शन.
What is the function? Now that will increase the uterine motility. Uterine motility को increase करेगा, and that also increase the sperm motility. Sperm का motility को increase करने के लिए flagellar activity को increase करेगा कि नहीं? So they will activate the sperm and they will increase the motility of the uterus. अब सोचिए uterus का अगर motility increase किया, जो sperm pass करेगा वो faster हो जाएगा कि नहीं? बस इसको याद रखना कि ये यूट्राइन मोटिलिटी को इंक्रीज करता है. फिर हम बताएंगे कि कहां पे कैसे यूज किया जाता है. इसको एबॉर्शन के लिए भी यूज किया जाता है. कैसे? अरे यूट्राइन मोटिलिटी होगा तो इम्प्लांटेशन डिटैच हो जाएगा कि नहीं? मैंने क्या बोला? सिर्फ आपको फंक्शन याद रखना है, तब दिमाग एकदम स्ट्राइक करेगा कहां पे कैसे हम यूज करेंगे. तो प्रोस्टाग्लैंडिन activation of the sperm and increased uterine motility. And also the seminal vesicle fluid contain some enzyme. ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन में रेगुलरली आता है ये कि भाई एंजाइम प्रेजेंट इन द सेमिनल वेसिकल फ्लूइड. यस, प्रेजेंट. कंप्लीट. Next we are coming to number 2, prostate gland. It is a collection of 20 to 30 tubular alveolar gland. In the male reproductive system, I have shown you the prostate gland is, and that is single. याद है? That prostate gland is single and present at the base of the urinary bladder. But actually it is not a single. It is a composite gland made up of 20 to 30 tubular alveolar gland. Now question is, what is the meaning of tubular alveolar? Okay, the gland which is tubular is called as tubular gland. The gland which is your alveolar in structure called as alveolar gland. The structure which is made up of both tubular plus alveolar. Then that is called as what? Tubular alveolar gland. जरूरत नहीं है डायग्राम करना, खाली मैंने शो कर दिया. So collection of 20 to 30 tubular alveolar glands present at the base of urinary bladder. Secrete prostatic fluid. Now see what is the composition. What is the composition? Citrate ion, calcium ion, phosphate ion, co-fibrinolysin, profibrinolysin, cutting enzyme,
याद है पढ़े तो हम लोग सीमेन कैन क्लट why because it contains clotting factor or clotting enzyme. As you can see very clearly कि different type of ions present, so it provide the alkalinity to the cement. तो सीमेंट का जो कलर है, सीमेंट का जो ऑर्डर है, सीमेंट का जो पीएच है, ये सब एक्चुअली डिसाइड कौन करता है? प्रोस्टेटिक फ्लूइड. Although the alkalinity of the semen is also decided by the seminal vesicle fluid. बफर कैसे करेगा? हम लोग डिस्कशन किए एंड दैट इज बाय बफर की वजह से वो भी अल्कलाइनिटी को मेंटेन करता है. सो प्राइमरीली कौन मेंटेन करता है अगर क्वेश्चन पूछे? सेमिनल वेसिकल. देखिए तो आपका कुछ लिखा है क्या आपके एनसीईआरटी में या आपके स्टडी मैट में? ये सेंटेंस हु इज रिस्पांसिबल फॉर द प्राइमरीली हु मेंटेन्स द अल्कलाइनिटी ऑफ द सीमेन. चेक करिए क्या लिखा है. पे लिखा है ना? मिल गया क्वेश्चन? वो तो है ही, लेकिन प्राइमरीली कौन बफर जो काम करेगा वही तो होगा. लिखा होगा वो सेंटेंस, मिला? एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है. नहीं लिखा? आता है ये क्वेश्चन. प्राइमरीली रिस्पांसिबल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी और एक्सेसरी ग्लैंड? दैट इज सेमिनल वेसिकल. कंप्लीट. तो लास्ट नंबर 3, कॉपर्स ग्लैंड. Copper's gland is also called as what? Bulbourethral gland. ये पेड़ था कि नहीं? Secretes copper's fluid is composed of mucus. Mainly कॉपर्स ग्लैंड का जो फ्लूइड है उसमें म्यूकस होता है which helps in lubrication. lubrication कुछ भी हो सकता है. यूरिनरी sorry that is female reproductive tract को lubricate भी कर सकता है. that also lubricates the semen, that will also lubricate the sperms. एक मीडियम प्रोवाइड करता है, lubrication medium प्रोवाइड करता है, that is bulbourethral gland. So this is all about the accessory reproductive structure in case of male. Now we are coming to the semen. और seminal plasma भी बोलते हैं उसको. तो इसको न्यूट्रलाइज तो करेगा ये भी करेगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में भी एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है वो भी न्यूट्रलाइज करेगा ना. सेमिनल वेसिकल का वहां पे छोड़ अल्कलाइनिटी को मेंटेन करेगा. Acidity of the urinary tract is to be neutralized by some other structure. We will discuss in the female reproductive structure. So composition में आते हैं. देखिए बहुत ही क्लियर है. फर्स्ट क्वेश्चन, which is the most important percentage of the semen? Now 60 to 70% of the semen is composed of
seminal fluid. 20 to 30% is composed of prostatic fluid. 10% of the semen is composed of semen, sorry, sperm, and almost trace quantity. Trace बहुत ही negligible. What that is? Copper. बात को समझे? What is the pH? 7.3. 7.2 लिखिए, 7.2 to 7.7. That is slightly alkaline. अब जो क्वेश्चन में आता है वो क्वेश्चन हम आपको बता सकते हैं. Each ejaculation with 2.5 to 5 ml semen. ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, सो फैक्टर इज देयर. तो द वेरिएबल अमाउंट कितना हुआ ना, 2.5 to 5 ml of semen is to be ejaculated per ejaculation, and this ejaculation contained how many sperm? The which contain 200 to 300 million sperm. So what is the amount of a number of sperm present per ejaculation? 200 to 300 million sperm count in each ejaculation, and quantity कितना हो गया ना, 2.5 to 5. Now the question is, for normal fertility, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? नॉर्मल फर्टिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम क्राइटेरिया. So what is the minimum criteria for the normal fertility? Number 1, sperm count कितना होना चाहिए एटलीस्ट? The sperm count should be 20 million per ml. मिनिमम मैंने मेंशन कर दिया पहले से, तो याद रखने जो भी मैं कैरेक्टर लिख रहा हूं वो मिनिमम क्राइटेरिया है. उससे कम होगा तो ये हो जाएगा इनफर्टाइल. 20 million per ml sperm count. ये है नंबर 1. नंबर 2, देखिए हम बात कर रहे थे अभी, स्पर्म शुड बी वेल शेप एंड साइज, स्पर्म शुड बी विगरस मोटाइल और लो मोटाइल. ये परसेंटेज याद रखना है कि 60% ऑफ द स्पर्म एटलीस्ट नॉर्मल शेप एंड साइज. मतलब 20 मिलियन पर एमएल दिया है, 20 ml का 60% होना चाहिए नॉर्मल शेप एंड साइज, उसका 40% होना चाहिए नॉर्मल विगरस मोटाइल. तो अगर आपको 20 मिलियन दिया है तो कितना मिलियन होना चाहिए वेल शेप एंड साइज? कितना होना चाहिए? 60%. तो 60% कितना होगा? 12 मिलियन. सो 12 मिलियन पर ml, तो स्पर्म शुड बी वेल शेप एंड साइज.
उसका 40% होना चाहिए विगरस मोटाइल। मतलब कितना स्पर्म काउंट होना चाहिए जो विगरस मोटाइल होना चाहिए? 12 मिलियन का 40%। समझ में आ रहा है कि नहीं? याद रखना कि 12 मिलियन का 40% होगा, 20 मिलियन का 40% नहीं होगा, 60 का 40। इसीलिए जरूरी। नंबर 3, सर ये 40% है, ये 60%, सर दिस इज 60%। Among from them मतलब 60%। Among from them 40% should be vigorous motile। क्वेश्चन क्या देगा? क्वेश्चन देगा a person sperm count is 250 million per ejaculation। What should be the minimum criteria for that person to be a fertile? मिनिमम फर्टिलिटी कैरेक्टर क्या होना चाहिए? आपको सेक्शन मतलब कॉलम में कॉलम बी करके दिया है परसेंटेज। So this billion sperm should be well separate size, this billion sperm should be vigorous motile। तो क्या होना चाहिए? 250 मिलियन दे दिया है आपको, ठीक है, पर इजैकुलेशन, राइट? परसेंटेज निकालिए, 250 का 60% कितना होगा? 60% तो मिलीलीटर कम हो सकता है, तो 5 से नहीं, डिवाइड नहीं करना है। यहाँ पे जो 20 मिलियन ml है वो स्पर्म काउंट मिनिमम नंबर है। ये मिनिमम नंबर है। मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि एक पर्सन का 250 मिलियन इजैकुलेशन, तो मिनिमम में स्पर्म काउंट नहीं पूछ रहा हूं, मिनिमम में आपको सेपेंट साइज एंड विगरस मोटाइल पूछ रहा हूं। तो उसका तो परसेंटेज निकालेंगे हम लोग। तो 60% क्या होना चाहिए? वेल सेपेंट साइज। तो 250 का 60% कितना आ गया? 150 मिलियन। वेल सेपेंट साइज होगा 150 मिलियन पर इजैकुलेशन की पर ml? पर इजैकुलेशन। बात को समझे कि नहीं? इसीलिए क्वेश्चन आपको हिला देगा। तो ध्यान रखना कि ml दिया है कि इजैकुलेशन दिया है। मैंने आपको इजैकुलेशन दिया यहाँ पे क्वेश्चन में। सो 150 मिलियन पर इजैकुलेशन वेल सेपरेट स्टेज, एंड उसका 40%। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 40% ऑफ 60%, राइट? 40% ऑफ 60% मतलब कितना हो जाएगा? 60 मिलियन vigorous motile। ये है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आता है आजकल, ध्यान रखना, बहुत इजी है। हम लोग करते क्या है पता है? ये 60% का 40% सब कुछ ठीक कर देते हैं, बस लास्ट में ये 60% का 40% हम निकालते नहीं। हम लोग क्या करते हैं?
250 मिलियन का 40% निकालेंगे, वो गलत हो जाएगा। हम लोग को 60% का 40% निकालना है। So this is all about the male reproductive system. Now we will start the female reproductive system. Complete है? आंसर यहाँ पे समझ में आ गया? 150, 60. 150 male and second size and 60 million vigorous motile per ejaculation, right? मैंने दो अलग अलग क्वेश्चन दे दिया। फॉर्म काउंट आपको समझा दिया और इजैकुलेशन आपको समझा दिया। कैसे काउंट करना है क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। So we are coming to the female reproductive system. So female reproductive system is consisting of two parts. Primary, sex organ, and secondary sex organ. Primary sex organ, one pair of ovary. Secondary sex organ, oviduct, one pair. Uterus, single. Vagina, vulva, and mammary gland. Is paired. बाकी vulva हम डिस्कशन करेंगे तो आपको बता देंगे वो bulbo vestibular gland, ठीक है, skinny gland हम बताएंगे vulva के अंदर. So this is the secondary sex organ in case of female. स्टार्ट करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम स्टार्ट करते हैं. So यूटरस में तीन अलग अलग लेयर होता है.
inner is endometrium, middle is myometrium and outer is perimetrium. तो इनमें से कौन सा मस्कुलर है? कौन सा? Highly glandular and vascular. Which one? Endometrium. Myometrium is muscular. Endometrium is vascular and glandular. Perimetrium क्या है? The perimetrium is actually coelomic epithelium. याद करिए. Peritoneum. याद आया? Peritoneum here it is from the perimetrium and which is made up of epithelial tissue. डायग्राम हो गया? So let's have a leveling of this. देखिए हम लोग फैलोपियन ट्यूब में आते हैं पहले और ओविडक्ट. This is the part called as uterine part. This is called as isthmus. This is ampulla. So what is the difference? Ampulla होता है funnel set. Sorry, wider. So wider part is ampulla. Narrow part is called as what? Isthmus. And the part which is close to the uterus is called as what? Uterine part. These three are the part of the oviduct. So this is the structure of oviduct. And आप लोग पढ़े कि oviduct के अंदर cilia होता है, पढ़े हैं? And that helps in what? Conduction of ovum. Because the ovum is non-motile. तो यहाँ पे cilia इसीलिए होता था कि ovum को वो conduct करे. And secondly, if the fertilization will occurs, then the zygote will also, or the embryo will also passes towards uterus by means of the conducting activity of the cilia. So what is the site of fertilization? Ampulla, and that is why it is wider. The funnel set part is called as what? क्या है funnel set part का नाम क्या है? Infundibulum. And the opening is called as जिसके through ovum pass करेगा, ostium. तो सबका मीनिंग बहुत यूनिक है. Ostium is the opening. Infundibulum is the funnel set part. And the fimbriae is the finger-like structure.
So what is the function of fin ray? That increase the surface area, catching area, for the catching of what na ovum to be released from the ovary during the process called as ovulation. So this is the ovary. Uterus में आते हैं. Uterus it is also called as uterus is also called as what? Metra. Hystera. इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना यूटेरस का जो सर्जिकल रिमूवल होता है दैट इज कॉल्ड एज हिस्टेरेक्टोमी. समझे? Now uterus is divisible into three distinct parts. The fundus. Fundus का क्राइटेरिया क्या है? नट डोम्स. So dome shaped part is called as fundus. The middle part is called as what na body. The सबसे large part that is called as what na body. And the narrow part is called as what na cervix. यूटेरस का कितना पार्ट हो गया? फंडस, बॉडी, सर्विक्स. फंडस हो गया डोम सेट, वाइड पार्ट क्या है ना बॉडी, एंड द सर्विक्स इज नैरो पार्ट. कैनल, नैरो कैनल रीजन. बॉडी जो हो गया वाइड पार्ट हो गया. So these are the different part of the uterus. Now the opening which open the cervix with the body is called as internal os. Os मतलब opening. The opening which is communicating the cervix with the body part is called as internal os, and the opening which communicating the cervix with the vagina is called as external os. And this is vagina, and the wall of the vagina is called as vaginal rugae. Vaginal rugae क्या है? रफ है कि नहीं? Rough wall of the vagina is called as vaginal rugae. It is to be covered by a covering, membranous covering, a mucus covering called as hymen. And this opening is called as vaginal orifice. Orifice मैंने आपको बताया था. Orifice का मतलब क्या है? Opening. So vaginal orifice or vaginal opening covered by a membranous covering called as hymen. Mucus membranous covering. इसके बारे में बताएंगे थोड़ी देर में. आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया. हम ओवरी का डायग्राम अलग से सेपरेटली करेंगे. हो गया? नाउ कुछ वर्ड है जो आपको कंफ्यूज करने वाला है. जैसे ये है इनर वॉल 1, इसको 3 करते हैं. ये है मिडिल वॉल 2, ये है आउटर वॉल 1. नेम क्या है? मैंने अभी बताया था. नेम क्या होगा? इनर वॉल क्या है? एंडो. ये क्या है? मायो.
ये क्या है? पेरी। So endometrium inner, myometrium middle, perimetrium outer. कंफ्यूज क्या करेगा ना? मायोमेट्रियम मेसोमेट्रियम, समझ में आ रहा है कि नहीं? मायोमेट्रियम मेसोमेट्रियम, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द मायोमेट्रियम एंड मेसोमेट्रियम? मेसोमेट्रियम क्या? मायोमेट्रियम तो आपके सामने है। मेसोमेट्रियम क्या है? मेसोवेरियम क्या है? इसलिए 3 वर्ड समझना बहुत जरूरी है। ये समझ में आ गया? मेंशन कर दीजिएगा, एंडोमेट्रियम वैस्कुलर ग्लैंडुलर इनर, मायोमेट्रियम that is made up of smooth muscles, मेंशन करिएगा ये सब चीज। पेरीमेट्रियम सिलोमिक एपिथेलियम आउटर, पक्का मेंशन करिएगा। मैं हर चीज लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, आप लोग लिखिएगा ये सब चीज। सब लिखना पड़ेगा नहीं? सब लिखना पड़ेगा। ग्लैंडुलर एंड वैस्कुलर, एंड हम लोग पढ़े थे ना, रिलैक्सिन सॉरी ऑक्सीटोसिन इज कॉन्ट्रैक्टिंग द यूटेराइन एंड मायोमेट्रियम, स्मूथ मसल उसका टारगेट है कि नहीं? तो आपके सामने हिस्टोलॉजी आ गया, ये है क्वेश्चन। हिस्टोलॉजिकली एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम पेरीमेट्रियम किस एपिथेलियल टिश्यू से, किस टिश्यू से बना है? तो पेरीमेट्रियम हो गया एपिथेलियम, मायोमेट्रियम हो गया मस्क्यूलर, एंडोमेट्रियम हो गया ग्लैंडुलर। ये है क्वेश्चन। ओवरी कनेक्टेड टू uterus and pelvic wall by ovarian ligament. Ovary connected to lower abdominal cavity by mesovarium. Uterus connected to lower abdominal wall or uterus to abdominal wall by mesometrium. Sorry. Uterus connected to abdominal wall by mesometrium. Yes, ये तो myometrium, right? Mesometrium. 3 चीज सामने, मायोमेट्रियम, मेसोवेरियम, मेसोमेट्रियम। ये 3 आपको क्वेश्चंस में पूछेगा, ऑप्शंस में कंफ्यूज करने के लिए। मायोमेट्रियम इज द मिडिल वॉल ऑफ यूटेरस,
Mesovarium is the connection or connecting the ovary with the lower abdominal cavity, and mesovarium is connecting the uterus with the abdominal wall. कोई प्रॉब्लम है अभी तक? चलिए और कुछ पॉइंट्स. साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? एम्पुला. सेकंड पॉइंट, कॉपुलेटरी कैनल कौन है? Which is the copulatory canal? Vagina. Which is the birth canal or parturition canal? बोलिए. पैट्यूरेशन जब होगा वो सर्विक्स एंड वेजिना दोनों को क्रॉस करके आएगा कि नहीं? तो इसीलिए सर्विक्स प्लस वेजिना बोथ collectively form the parturition of birth canal, लेकिन सिर्फ वेजिना को हम लोग बोलेंगे कॉपुलेटरी कैनल. Vagina is the only female reproductive structure which is devoid of gland. याद रहेगा ये. नो ग्लैंड इन द वेजिना, बाकी हर जगह ग्लैंड है. ये क्वेश्चन है. सेकंड क्या है? वेजिना का जो हिस्टोलॉजी हम बात किए थे, याद करिए टिश्यू चैप्टर. याद करिए, नॉन केराटिनाइज्ड या केराटिनाइज्ड? नॉन केराटिनाइज्ड याद है? मतलब ये ड्राई होगा कि मॉइस्ट होगा? केराटिनाइज्ड होता तो ड्राई होगा. ये है तो नॉन केराटिनाइज्ड stratified squamous. Non-stratified, non-keratinized, stratified squamous. This is the histology section of the vagina. And अभी मैं कुछ देर पहले बोल रहा था कि हाइमेन, ठीक है, हाइमेन का हिस्टोलॉजी मैं आपको बता चुका हूं. It is a type of membranous covering, act as a diaphragm which covering the vaginal orifice. Point ये है कि वेजिना का जो ओपनिंग है that is completely closed by the hymen up to the beginning of the menstrual cycle in the female called as menarche. मतलब puberty, प्रैक्टिकली बोले तो puberty तक ये completely closed है. जैसे puberty स्टार्ट होगा, menstrual bleeding स्टार्ट होगा, that hymen will slightly perforate. Then that will again slightly damage when the first copulatory activity or copulation takes place, and gradually it will degenerate, and almost it is degenerated or lost when the parturition of the baby takes place, right? But as because the female now it is associated with the different activities, athletic activity, cycling, riding, horse riding, everything. And that is why the hymen could be ruptured before the menarche. So that is why the question है कि the presence or absence of the hymen is not a reliable indicator of sexual experience or virginity in the female. समझ में आया? And that is the statement.
presence or absence of hymen is not a reliable indicator of sexual experience or virginity in female. Vidikat?